Hello students, welcome to you in biology class. Today the topic is steps of photosynthesis. It is the part of life process in photosynthesis. Before going to study about the steps of photosynthesis, first we observe the diagram of the cells and the diagram of chloroplast. Here the rough diagram of cells. As you know that each and every cells is bounded by plasma membranes, but in case of plant the plasma membranes is covered by a rigid and hard covering called cell wall. Within the plasma membrane, there is a fluid-like structure called cytoplasm. In the cytoplasms, a nucleus present, and there are many cell organelles are present. But here, I focus only in chloroplast. So this is the structure of chloroplast. Now, let us look these structures. This is the structures of chloroplast. This structure is seen on electron microscopes, highly magnified electron microscopes. In the chloroplast, there is a boundary as like the plasma membranes. Within the boundary in chloroplast, there are many flattened sac-like structures present in the chloroplast called thylakoids. There are many thylakoids arranged one upon others and stacking to each other, such as there are many coins arranged one upon another form a stacking structures. जैसे कि एक चावल के बोरे पर दूसरे चावल के बोरे को रख देते हैं, तीसरे चावल के बोरे को रख देते हैं, या सीमेंट के एक बोरे के ऊपर दूसरे बोरे को रख देते हैं, तो उसको स्टैकिंग कहा जाता है. सेम हियर thylakoids are stacking in the chloroplast, and that stacking structure is called granum. Now, there are fluid-like structures in the chloroplast. That fluid-like structure is called stroma. Granum invaginated in the stroma. ग्रेना जो होता है वह ग्रेना इस स्ट्रोमा फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स में वह धसी हुई रहती है. सिंगुलर को ग्रेनम कहेंगे, प्लूरल जब कहा जाएगा तो ग्रेना हो जाएगा. वन ग्रेनम अटैच विद द अदर ग्रेनम बाय लैमेली. दैट मीन्स all granum are interconnected by lamellae. In the thylakoids, there is a green pigment. That green pigment is called chlorophylls. Chlorophyll is the green pigments which have the ability to absorb the light energy from sun. Now this is all about the structure of chloroplast. Now this is the thylakoids and this is the stroma. These two are the main important structures in the chloroplast. Then steps of the photosynthesis we can study it. The light reaction and dark reactions. So thylakoid is the site for light reaction and stroma is the site for dark reactions. Now come on the steps of photosynthesis. Photosynthesis takes place in 3 steps. Absorption of light energy by chlorophyll. First, the absorption of light by chlorophylls. Then second step, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules. Splitting means breakdown.
And the third, reduction of CO2 by hydrogen ion to form glucose molecules. These all three steps we studied in only two main steps. Here you can observe स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन में क्या होता है? स्टेप नंबर वन को लाइट रिएक्शन कहा जाता है एंड फोटोलाइसिस पे करते हैं. फोटोलाइसिस टर्म पे हम लोग फिर इसके स्टडी के बाद आ रहे हैं इस टर्म्स पे. फोटोलाइसिस क्या है इसको समझेंगे. ये जो लाइट रिएक्शन होती है या लाइट रिएक्शंस या थाइलाकोइड एक्वेरियम. वेयर इज थाइलाकोइड इन क्लोरोप्लास्ट? हियर इज द थाइलाकोइड. It is the part of chloroplast. Here the chlorophyll is present, so the light reaction occurs in the thylakoid of granule. What happen in the light reactions? Let us see. Chlorophylls absorb the light energy from sun, and after absorbing the light energy, that energy is transferred to the water molecule. Then water molecule break down into hydrogen ions, oxygen gas, and also release ATP as a form of energy. Then what happens in these reactions? First step of light reactions. Light break down the water molecule to form hydrogen ions and oxygen molecules. You know that when any reactions taking place in the presence of light, in which the complex molecules break down into simple molecules in presence of light, then this reaction is called photolysis reactions. Photo means light, lysis means to break down. So here water molecule break down in the presence of sunlight into hydrogen ion and oxygen molecule. So this reaction is also called light photolysis or light reactions. Now one term is here, PAR. PAR abbreviations photosynthetic active radiations. Now the light reactions occurs from any regions of the light, white light, and that regions of the white light is called PAR. Here the visuous violet to red region of the light is sufficient for the photolysis and light reactions. The range of the PAR from the range of the PAR wavelength range of PAR is 400 nanometer to 700 nanometers. 400 nanometer approx violet colors of light, white light, and 700 nanometer wavelength is for red color of light. After breakdown of the H2O molecules, oxygen gas released through the stomata out from the plant cells. Hydrogen ion and ATP out from thylakoids and come into the stroma regions. Because further reactions of the photosynthesis required enzymes, and that enzymes are available in the stroma. Then second step will start. Second step is called dark reactions and reduction reactions. I will come on this point. And this reaction occurs in the stroma of thylakoids, means here. What happened in dark reactions? The CO2 came through stomata in cells and in finally chloroplast or stroma of chloroplast. Here CO2 combined with hydrogen ions and ATP used as energy
एटीपी खर्च होती है और यह CO2 और यह हाइड्रोजन आयंस दोनों को कंबाइंड करती है। एटीपी एनर्जी के रूप में खर्च होती है। जो एटीपी फोटोलाइसिस में हमें ऑब्टेंड हुई थी, हाइड्रोजन आयन भी फोटोलाइसिस में ऑब्टेंड हुआ था। तो इसका पर्पस यही था, एटीपी का इन दोनों को कंबाइन करना, और हाइड्रोजन का पर्पस ही था इसके साथ CO2 के साथ कंबाइन होना। कंबाइंड होने के बाद जो है यानी होगा, कंबाइंड होने के बाद यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। फाइनल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, दोनों स्टेप को जब हम लोग मिला देंगे तो हमें फाइनल रिएक्शन जो मिलता है, जिस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम लोग कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आया कहाँ से है वह देखिए। यह वाटर मॉलिक्यूल और यह CO2, यह रिएक्टेंट है और इधर वाले को प्रोडक्ट कहा जाता है। यह CO2 और यह वाटर मॉलिक्यूल्स ये दोनों कंबाइन करता है। सनलाइट, क्लोरोफिल्स, ये जो H+ और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ATP, जो H+ और हाइड्रोजन आयन और ATP जो रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन आयन और ATP ये यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, इसलिए रिएक्टेंट साइड में इस हाइड्रोजन आयन और ATP को मेंशन नहीं किया है। चाहे रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में भी इसको मेंशन नहीं किया गया है। फाइनली बच किया जाता है C6H12O6 जो बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो रिलीज हो रही है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टोमाटा के थ्रू या बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में यह रिलीज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फोटोसिंथेसिस की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, जैसे CO2, क्लोरोफिल्स, लाइट, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया था, उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।